So, yeah, thank you, Anush. Thank you so much. So, very good afternoon, guys. Welcome to Bank Nifty Expiry Play. So today this is Bank Nifty weekly expiry. We'll have next month monthly expiry on 30th April. And now coming directly to the point, talking about Bank Nifty first. If we see the Bank Nifty from past 2 days has been lackluster. So the bigger trend is positive, but at the same time there is not much action above 48,000 level. So we have seen a positive flattish opening from intraday levels. We see some uptick towards 48,200 levels. However, if we see the immediate chart structure, so weekly scale, the setup of Bank Nifty is positive. Images on the daily basis, it is forming higher lows. So overall, the setup is biased positive. On the downside, support is seen near 48,000 levels. Now coming on to the intraday levels, if we see from past 3.5, 4 hours, Bank Nifty is stuck in a range between 48,100 to 48,250. And since morning, there was not much move while option buying. And this has been the perfect day for option writer because strategy, whenever we have sold at the money call put and we have gone through iron butterfly spreads, we have definitely made money because premiums are there, but there is no momentum. Because of which the premiums decay is happening and the option seller is making the most of it. So now talking about Bank Nifty level wise, 48,000 is a major support for Bank Nifty. On the upside, 48,250, 48,300 resistance. Now if you go on a smaller time frame, 48,100 is the immediate support. On the upper one, 48,250. And since almost 10, 13, 11 o'clock, this has been the range. Coming back to Nifty relatively have seen good outperformance. If we see, we have seen almost a recovery of 700 points in last couple of sessions from Friday low to today's high. 21,777 से हमने 22,450, 470 तक की रिकवरी देखी है. डेली स्केल के बारे में बात करें निफ्टी में भी तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव ही है. वीकली स्केल इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बट as we said yesterday, there was one of the key event that happened, especially India Wix, and I think across all the media platforms and everywhere, this was the key thing कि India Wix 18% कैसे correct हो गया. And this is one of event that happened after many years, or in fact after many months, if I say, and it is trading near 10 and a half 11 levels. So it's a one off thing. जनरली इंडिया विक्स क्या इंडिकेट करता है कि क्या मोमेंटम रहेगा मार्केट में. एंड इंडिया विक्स इज हिस्टोरिकल नंबर ऑफ मंथ्स लो, नंबर ऑफ years low, because of which there is no momentum. And yesterday and today, if you see, surprisingly, if you see the pricing also, it is more or less static. निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई मेजर मूवमेंट नहीं है. हाँ, अगर आप फ्यूचर्स के प्ले थ्रू करें तो डेफिनेटली देयर इज मोमेंटम, बट एट इफ यू सी फ्रॉम द ऑप्शन बाइंग पर्सपेक्टिव देयर इज नो मेजर मोमेंटम. So coming on to back to the levels, we are tracking since morning. We have on the call set for Bank Nifty 48,100, 48,050 का immediate support है Bank Nifty में. Upper one में 48,250 is the hurdle zone. So as of now, we are tracking 48,100 call and 48,200 put. These two strikes as of now we are tracking. I'll repeat: 48,100 call we are tracking Bank Nifty and 48,200. Our overall slightly bias is towards positive side because ICICI is holding, Kotak is holding. There is some pain in SBI, but overall setup wise, it is still holding at high levels. So we are still tracking and will update कि कौन से strikes या कौन से strategy के through play कर सकते हैं. As of now, we have discussed the strikes. Bank Nifty में 48,100 call and put side में 48,200. These two strikes we are tracking for Bank Nifty. Levels हमने discuss किए. 48,100 is the support. 48,000, 48,100 is the support zone. Upper band 48,250 is the key hurdle levels. VWAP के बारे में बात करें, weekly VWAP. So Bank Nifty VWAP is near 48,088, because of which Bank Nifty since afternoon, since in fact morning, it has been consolidating within that 120 points range. So we are analyzing and definitely will update. Adding to this thing, there is very good stock specific action across the broader indices. Mid cap, small cap, both are trading at lifetime highs. काफी अच्छा एक्शन हमने देखा है मेटल पैक में, एक्सचेंजेस में, शिपिंग स्टॉक्स में, across. So index is overall positive to consolidative bias, but good stock specific action is seen. We'll come up with the BTST ideas also. We'll share in a bit. In the meantime, what we can do, Anuj, we can take couple of stock queries and then we can move.
Yeah, I think there's some issue. I think there's some technical glitch over there. But in the meantime, at least you can share a couple of stocks. So at least I can take that time and share about the views. And as soon as that issue gets resolved, so we can share it. Sure. So exchanges has been the flavor from past couple of days, and we have seen terrific move across all the exchanges. If we see the chart setup positionally wise, monthly it is giving a classical range breakout after 4 or 5 months. So positionally, serial is quite strong from 2 to 3 months view, 2300, 2400 levels plus. On immediate basis, we have seen sharp up move from almost 1950 to 2200 levels. So थोड़ा सा cool off है ऊपर के level से, but positionally काफी अच्छा है. 19, 18, 2000 will be again a good zone to buy for an upside move towards 2400 levels. NDCC, right? So if you see overall chart setup wise, monthly setup is good. Weekly it is range bound. Daily after a sharp up move of yesterday, it is consolidating. But the good part is that it is holding above 130 levels. So जब तक 129 130 के ऊपर closing रहती है, can continue to hold for an upside move towards 135 then 138 levels. Bajaj Auto Holdings. Okay. 6900. So if you see overall auto is in terrific bull run, it has been the biggest outperformer within all the sectors. Within that also Bajaj Auto is trading at lifetime high. Some cool off is seen at higher levels. However, as you have the buying price is quite lower, so better to hold. इमीडिएट बेसिस पे आप 8400 का स्टॉप लॉस रख सकते हो जब तक इसके ऊपर है कंटिन्यू टू होल्ड फॉर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव. हिंदुस्तान मोटर्स. Okay, so I'll just go to the chart. Monthly, it has given a range breakout about 25 levels. Weekly also it has been quite strong. Daily में थोड़ा सा ऊपर से cool off हुआ है, but positionally wise setup is quite strong for 32 35 levels. Can continue to hold this stock. I'll just check the chart. Kirti Industries, right? Yeah, I'll just check. Kirti Industries, if I just check the chart, overall, uh, Kirti, what's the current price, Anuj? I'll just check. Kirti, one second. I'll just check. Is it just listed on BSC exchange? Because in the FNO space, not Falcon, it is not showing the script. I'll just check. KIR. Yeah, but I don't know. It's not getting display on the Falcon on the software. So no worries. Yeah, we can move to the next one. Okay. So if you see Kotak Bank, the overall the structure, it has been the huge underperformer within the banking space in the entire past 2 years. एंड अगर हम बड़ा ट्रेंड भी इसका देखा जाए तो 1750 से लेके अराउंड 1850 1900 की एक रेंज है. अगर आप फ्यूचर से प्ले कर रहे हैं सो आई थिंक सेटअप वाइज यहाँ से 3 से 4% का मूव दिख सकता है. बट इंपॉर्टेंट ये है 4th में को इसका रिजल्ट है. सो आई थिंक करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं. स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 1810 का, ऊपर में 90 1880 एंड 1920 के लेवल्स के लिए. So now coming back to the बैंक निफ्टी सेटअप इफ यू सी, सो हमने जो पहले डिस्कस किया था बैंक निफ्टी की स्ट्राइक्स 48 100 कॉल साइड में 48 200. वी आर ट्रैकिंग दैट एज वेल एंड इफ यू सी बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग नियर 48 160 170 लेवल्स. सो एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है काफी टाइम से एंड वी आर जस्ट ट्रैकिंग दैट कि प्रीमियम में क्या रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है कि डिप पे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं सेटअप के हिसाब से. सो वी आर स्टिल ट्रैकिंग दैट. But so far there has been not been any major move, but we will just again revisit and see कि क्या हो रहा है उसमें.
सो आई थिंक 15 मिनट स्टार्ट में एक रेंज में कंटिन्यू चल रहा है. 48,100 सपोर्ट है, ऊपर 48,200 250 की रेजिस्टेंस है. 48,100 का कॉल जो हम देख रहे हैं अराउंड 84 चल रहा है. We are tracking, and if you see, this has been the move mainly because of the lower walls. So एक lower volatility जो है जिसके वजह से एक static हो गया है, मेजर मूव नहीं आ रहा है इंडेक्स में. कॉल एंड पुट दोनों डीके हो रहे हैं. So that's where we are little bit on the defensive side. But जैसे भी favorable लगेगा कि कौन से लेवल पे एंटर कर सकते हैं, we'll update on the bank nifty call side or the put side depending upon the setup. And I think apart from this also, couple of ideas we shared in the last 2 to 3 days in stock wise. Also we have seen good movement, BSC ho, CDSL ho, Musdog, GRAC. So guys, keep booking profits also, because generally ये सब stocks 10 to 50% चलते हैं, then some profit booking and then it goes sideways for 15 to 20 days. So definitely profit book करते रहे. अगर आपका trading bet है, investment bet है, so definitely stay invested. And we can take another few stock trades also, Anuj, in the meantime. CG Power. What is the buying price? Okay. So looking at the technical perspective, monthly, weekly setup is quite strong. Continue to hold. Further momentum can be seen above 555 levels. So definitely continue to hold the stock. Setup wise काफी अच्छा है. धीरे धीरे ये 575 600 तक भी जा सकता है. So continue to hold this stock. Hudco, right? So Hudco, if you see the overall setup wise, it has been positive to consolidative. ये एक रेंज बाउंड काउंटर है जिसमें 185 190 मेजर सपोर्ट है, अपर बैंड में 210 का रेजिस्टेंस है. सेटअप वाइज वी एडवाइज टू कंटिन्यू टू होल्ड. डेली पे सेटअप पे एक रेंज ब्रेकआउट दिया है 196 197 के ऊपर. ब्रॉडर मार्केट में अच्छा एक्शन है, सो कंटिन्यू टू होल्ड विद कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 194 फॉर एन अपसाइड मूव टुवर्ड्स 2110 लेवल्स. Along with this, the BTST idea that we have shared and we have flashed it on terminal also is GALE. So overall CPSC stocks में काफी अच्छा मोमेंटम भी है. एंड अगर अब गेल का चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो मंथली एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, वीकली में भी स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, डेली में एक अच्छी स्पाइक हमने देखी है पिछले आर्ली चार्ट में और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है. सो गेल बाय कर सकते हैं एट 206 207 लेवल्स. स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 199 का, अपर बैंड में 215 220 लेवल्स के लिए. आईटीसी. सो जनरली इफ द इम्पोर्टेंट इज वेदर वो ट्रेडिंग के लिए लिया है, सो डेफिनेटली रेंज बाउंड काउंटर है. वी वुड एडवाइज टू सेल इट नियर 444 लेवल्स. अगर इन्वेस्टमेंट के लिए है, कैन कंटिन्यू टू होल्ड बिकॉज विद इन एफएमसीजी पैक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी. बट ट्रेडिंग है तो ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं है. सो एडवाइज टू सेल एट हाई लेवल्स नियर 440 443 लेवल्स. Aster DM. What is the buying price? 520. Okay, so I think I'll just check the stock is now quoting around 385. So I'll just recheck if there is any corporate action or this is the price setup. So if there's any corporate action, then it's fine. But if there is some negative news, so because stock is around 385 levels, अगर प्योरली चार्ट बेसिस पे देखें तो 395 to 400 एक मेजर लेवल है. इसको रीगेन करना पड़ेगा. अगर 400 के नीचे है, so better to exit on bounce because we have seen a big selling at high levels, so better to exit on bounce. Yeah, absolutely, Anuj. And if we see continuously, we are tracking Bank Nifty. If we see the chart also, and now it's like the accessibility of chart is so easily available to everyone. So even if we see the chart intraday movement, it has been one of the sluggish in the past couple of weeks. The movement has been sluggish, almost a ATR of 150, 120, 150, 200 points. So daily scale में inside bar बना रहा है. That indicates कि volatility काफी low है. But keeping in mind, the bigger trend is positive. सो आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आने वाला है सैटरडे को. आज एक्सिस का रिजल्ट है पोस्ट मार्केट आज.
So definitely some spike would be there, but the question is वो immediate आता है या couple of days में आता है, that is the main key thing. Talking from the strike perspective, 48 100 का कॉल जो हम देख रहे थे अराउंड 93 94 चल रहा है. अपर बैंड में 130 गया है, नीचे में इट मेड अ लो ऑफ अराउंड 75 80 लेवल्स. बैंक निफ्टी स्पॉट भी अराउंड 48 170 चल रहा है. So what we can do is we can go with 48 100 call. Right now it's around 95, but will not be in rush. हम इसको buy करेंगे around 80 से 85 की range में. I'll repeat, 48 100 call would buy in the range of 80 to 85. Stop loss रखेंगे हम 45 का, upside move towards 130 150 levels के लिए. So 48 100 call. Right now the premium is around 97 98 100 levels. So हम थोड़े से उसको डिप पे बाय करेंगे अराउंड 80 टू 85 की रेंज में. 45 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर 130 एंड देन 150 के टारगेट के लिए. So I think Anuj, you can mark this on the chat. Yes. Also, the purpose behind this thing is we are waiting for some dip. We have seen some dip, but at the same time, it is stuck in a range. That's why we're not going aggressive. Overall, the bigger trend is positive. That's why at the start of the session, we said our bias would be slightly positive, but the missing element is momentum, and that can be created only by the movement of heavy weights. So we are also closely tracking ICICI Bank, Kotak, HDFC, and more or less they have been positive, but the speed is not there. सो 48 100 का कॉल रेंज रहेगी 80 टू 85 की रेंज में बाय कर सकते हैं. 45 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 130 150 के है. In the meantime, we have shared one BTST idea Gale. Along with that, also, in fact, the stocks there is very good momentum in across broader indices. So, अगर positional के हिसाब से बात कर रहे हैं तो NMDC, SAIL, BDL is looking very strong from 2 to 3 months perspective. BSC भी एक अच्छा मूव हमने देखा, बट यहाँ से भी 2 से 3 महीने का अगर व्यू है तो डेफिनेटली कैन होल्ड इट. सो ये जो आइडियाज हम लोग बोल रहे हैं ये 2 से 3 महीने के व्यू है. NMDC, SAIL, BDL, BSC इमीडिएट बेसिस पे एक BTSC आइडिया गेल हमने शेयर किया है. लेवल्स हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिए. ऑल्सो गाइज कीप वन थिंग इन माइंड, रिजल्ट सीजन चल रहा है. सो जो भी आपकी पोजीशन है, वेदर इट्स थ्रू अगर फ्यूचर्स आपने ली है, सो बेटर टू हेज योर पोजीशंस बिकॉज रिजल्ट प्ले रहता है. सो डेफिनेटली कैन स्टॉक कैन सी 5 to 7% अपसाइड मूव ऑन द डाउन साइड. सो इट्स बेटर टू कीप योर पोजीशंस हेज अगर आपको लग रहा है कि वो काउंटर वॉलेटाइल है तो. The Bank Nifty call that we suggest is quoting in the range right now near 97 98 levels. जैसे ट्रिगर होता बाई की तरफ, will update on it. In the meantime, mid cap small cap indices there is good action seen across broader market, and in fact काफी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है और काफी अच्छे इंट्राडे ट्रेड स्विंग्स मिल भी रहे from past couple of sessions. So try to capitalize on that and make the most of it. Yeah, Anuj, we can take a few more stock queries in the meantime. So yeah, if we see, so there are, in fact, oil is one. It's a very big industry. A lot of industries are attached to it, whether it's OMCs or whether the paints or whether it's tires, whether it's cement. So all in all, you cannot just take it as with the same breath. All I can say is PSU, सरकारी stocks काफी अच्छे हैं. CPSA index, OMCs. So अगर आप थीम को प्ले करना है, so CPSA index में जो जो stocks है वो काफी अच्छे हैं. So you can go with that as a sector. ऑयल के हिसाब से बात करें तो ऑयल में OMCs है तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है. सो BPCL, HPCL. सो आई थिंक इंडस्ट्री स्पेसिफिक में आपको थोड़ा सा उसको नैरो डाउन करना पड़ेगा. देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्ले थ्रू इट. Adding one to this thing, metal index, metal sector is looking very strong, and I think coming few weeks के हिसाब से this could be the outperformer. So metal pack में NMDC, SAIL, they are looking very strong. So guys can definitely play out this theme as well as, because जो अपॉर्चुनिटी हमें वो कैपिटलाइज करनी है, चाहे वो इंडेक्स के थ्रू हो, चाहे वो स्टॉक्स के थ्रू हो, चाहे वो पोजिशनल सेटअप हो, चाहे वो BTST हो. 285, and I think the stock is already up by 45 35 40% past couple of weeks. So setup is quite strong, and continue to hold it. 420 430 would be a good level to book your profits. So I think 420 is a good zone. Continue to hold the stock, and 420 430 की रेंज में बाय कर इसको प्रॉफिट्स बुक्स कर सकते हैं.
Nazara 640. So if we see the bigger time structure, it is an overall downtrend, and generally such counters take a lot of time to pick up the momentum and gather and move towards higher levels. So our advice would be better to keep strict stop loss of 620 जो आपने पोजीशन होल्ड की हुई है, और या तो आप उधर थोड़ा अपर बैंड पे आता है अराउंड 670 680 तक, बेटर टू बुक प्रॉफिट्स एंड स्विच टू स्ट्रेंथ काउंटर्स, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है डाउन ट्रेंड में है. बेटर टू अवॉइड सच काउंटर्स. आप बुक कर सकते हैं या तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 680 के अराउंड आप इसको एग्जिट कर सकते हैं. किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज. So I think it's almost 4,000 percentage up, and I think this is one of the huge multi-bagger if you see. So I looking at the setup also, it is continuously in uptrend. Continue to hold this stock. It has given fresh range breakout on about 4,200 levels. So definitely 4,800, 5,000, 5,200 तक जा सकता है. Continue to hold this stock. Also, guys, keep this thing in mind. जो भी winning positions है, continue to hold it, because that is the additional alpha that you will make in the portfolio. Okay. 1027. So if you see the monthly setup, after sharp up move, it is consolidating a higher band. Weekly setup being 940 950 का एक अच्छा support zone है. Overall setup के हिसाब से बात करें, so 6 months down the line, definitely you can see levels towards 1200 1300 levels. So continue to hold. थोड़ा सा dip आता है 940 950 की range में, add further quantity and hold it for medium term perspective. uh, if you see the setup wise, it is range bound. Better to book profits in the range of around 68 70 levels. 70 तक आता है तो profit book करना चाहिए. Coming back to Bank Nifty, the call that we are tracking 48 100, it has got stuck at 100 level itself. We have recommended that call little bit lower. 80 से 85 की रेंज में हमने रेकमेंड किया हुआ है. बैंक निफ्टी जो स्पॉट है 48 193, इट इज ट्रेडिंग इन दैट रेंज इटसेल्फ. सो रेंज हमने ऑलरेडी अपडेट की है, और कोई मेजर मोमेंटम नहीं है. दैट्स वी आर वेटिंग फॉर द डिप. तो थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा. एंड जब भी ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा कंफर्ट रहता है, सो रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली चेंजेस वेरी क्विकली. दैट्स वे वी आर वेटिंग फॉर सम डिप. एंड अगर डिप आ जाता है, दैट वुड बी वेरी फ्रूटफुल. अगर नहीं आता है, नो वरीज, विल सी सम अदर सेटअप्स और विल ट्राई विद सम अदर ट्रेड. Suzlon. So Suzlon has been quite a big outperformer from December to almost in last 6 months. However, अब एक रेंज में आ गया है, नीचे 35, अपर बैंड में 44. So this has been the range for Suzlon. Setup wise, generally such counter is better to play from a short term perspective. So setup wise 37 का मेजर सपोर्ट है, अपर बैंड में 44 48 का रेजिस्टेंस है. किसी ने पोजीशंस बनाई हुई है, कंटिन्यू टू होल्ड इट विद कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 37. अपर बैंड में 45 48 लेवल्स तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. इरिडा. Okay. So as it says, listing is almost all last 3 to 4 months itself. Setup wise positive है. 140 का एक मेजर सपोर्ट है. आई थिंक कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक. आपको धीरे से वापस ये 180 190 तक का दिख सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में. सो कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक. Uh, if you see PSU space, overall PSU stocks has been quite outperforming. However, पिछले काफी टाइम से महाराष्ट्र बैंक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 7 से 8 हफ्तों से एक रेंज में है. नीचे 58 का सपोर्ट है, अपर बैंड में 68 70 का हर्डल है. सो इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम अ 15 to 20 days perspective, कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक. इमीडिएट बेसिस में कोई मेजर मोमेंटम नहीं है, बट अगर पोजिशनल बेस अगर 15 दिन 1 महीने का व्यू है, तो कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक. धीरे धीरे 68 69 तक ये जा सकता है, तो वो लेवल पे यू कैन बुक प्रॉफिट्स. 33. So if you see overall defense,
it has been the flavor of this bull market for almost last 1.5 2 years. And as their buying price is way too low, कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक. काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है. जब तक ये 200 नहीं टूटता तब तक इसमें हमें धीरे धीरे 280 300 तक के भी लेवल दिख सकते हैं. कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक. And overall, we have been quite bullish on the defense space itself, whether it's BL, whether it's HAL, whether it's BDL. So that has been the flavor. So continue with that trend. Absolutely. So here the option Greeks comes into picture. If you see Vega, that is India volatility, India VIX, that has been at the subpar levels. So generally क्या होता है, या तो आपको मोमेंटम चाहिए और उसके वजह से क्या हो रहा है, वो मोमेंटम मेजर है नहीं. There is it has Bank Nifty has got stuck in that range itself. 48 200 के पास ही चल रहा है. Because of that, there is no major swing as we are heading towards the expiry also contract. So the decay factor, that is the time theta, that is also hurting. So option buying में it's very important कि आपको momentum चाहिए, at the same time follow buying चाहिए. इशू यहाँ पे हो रहा है कि इंडिया विक्स जो लोअर है उसके वजह से एक रेंज छोटी हो गई है एंड देयर इज नो फॉलो अप बाइंग. दैट्स व्हाई द प्रीमियम्स आर नॉट इंचिंग हायर और लोअर either wise. Orient green. Orient green, right? 13. Okay. Continue to hold. Yeah. So overall bias पॉजिटिव टू कंसोलिडेटिव है. बहुत बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है. बट जब तक ये अराउंड 17.5 के ऊपर ट्रेड करता है, कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्टॉक. फ्रेश मोमेंटम 22 की क्रॉसिंग के ऊपर ही रहेगा. सो करंट जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखे. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप दिमाग में रखे 17.5. Yeah, because the thing is, if I think definitely the participants who are there in the session also, and if they're tracking, 48 100 call is, it has got stuck at that 101 level itself, and it made a dip near 90 levels, but again back to around 100 102 levels. So as we suggested कि अगर dip आएगा तो comfort रहेगा. आपने इसके सिवा अगर कोई भी कॉल आउट ऑफ द मनी का कॉल या पुट भी लिया हुआ था, that would have also been DK. So as of now there is no major momentum, and that has been the nature of the market. जैसा मार्केट का नेचर रहेगा, वी हैव टू प्ले अकॉर्डिंगली. सो हमारा वही सेम स्टैंड रहेगा. अगर डिप पे रहेगा तभी हम बाय करेंगे. एज ऑफ नाउ देयर इज नो ट्रेड ओपन इन इंडेक्स पर से. स्टॉक्स हमने शेयर किए पोजिशनल बेसिस ऑल्सो, शॉर्ट टर्म बेसिस ऑल्सो. BTST आइडिया गेल दिया हुआ है. सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इज गुड. इंडेक्स में एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड नहीं है अभी ओपन. Okay. I'll just open the chart. If long term is a view, so I'll go for the bigger time frame. Monthly, it is the structure is intact. अच्छी वॉल्यूम्स हमने देखी है पिछले 3 से 4 महीनों में. एंड सेटअप वाइज अगर देखें तो धीरे धीरे ये 250 270 तक जा सकता है. पोजिशनल स्टॉप लॉस हो जाएगा 185. कंटिन्यू टू होल्ड योर पोजिशंस फॉर एन अपसाइड मूव टुवर्ड्स 240 280 लेवल्स. बिकॉज 280 जो इसका ऑल टाइम हाई है, दैट मेड इन 2015 टू 265. सो 180 के स्टॉप लॉस से ऊपर 240 280 के लिए कंटिन्यू टू होल्ड दिस. Yeah, and I'll just like to give one update, Anuj. Whenever such thing happens, so there are times when option buys becomes quite restless. But ये टाइम पे हमें इम्पोर्टेंट है, हमें पेशेंस मेंटेन रखना है. वी जस्ट डोंट वांट टू गो विद एनी रैंडम ट्रेड्स. मार्केट के सेटअप के हिसाब से ही प्ले करें, दैट वुड बी मच मोर फेवरेबल. सो टुमारो विल हैव निफ्टी एक्सपायरी and share the BTST idea we have shared, positional idea also we have shared. So I think that's all from our side. Looking forward for you guys for tomorrow's expiry on Nifty. And that's all. Thank you guys.
Thank you. Thank you. No worries.